questions and then we can start. Okay, let's start. Okay, so in the last class we completed the chapter number 1 of the IoT. Today we'll start the unit number 2, that is the sensors, actuators, and the smart objects. Okay, so whatever we were saying in terms of the hardware or in terms of the devices, or we can say that in the Internet of Things, whatever comprises of the name things will be covered in this particular unit. Okay, so let's get on with it. Okay, guys, are you able to see the PPT? Okay, then let's say we'll start with the introduction part. Okay, just to remind you that let's say imagine a car which has an impressive ecosystem of sensors, okay, that provides an immense amount of data that can be intelligently consumed by a variety of systems and services on the car itself, as well as shared externally with other vehicles, the connected roadway infrastructure, or even a whole host of other cloud-based diagnostic and consumer services. Now, what do we mean by that? That means that, for example, we have created one autonomous vehicle. Okay, then to create that particular one autonomous vehicle, we have used variety of sensors. Okay, and those variety of sensors is giving me a huge volume of data. Now, that particular huge volume of data that I am using to do what? Okay, then that particular data I'm using it for some kind of services on the car. That let's say I'm able to find the location of the car, or let's say I'm able to find the temperature in the car, or temperature of the engine currently running, the speed of the car. Okay, those kind of services in the car itself. Okay, now these particular data I can share it with other kind of vehicles also, or I can share it with the connected roadway infrastructure. Now, why do I need to share the data with the roadway infrastructure? Is because to establish a communication. Okay, or you can say that I can shift all this to data to our cloud server. Okay, so I can provide these kind of services if I have designed an autonomous vehicle. Okay, so उसमें आएगा क्या क्या? Okay, then we can say that from behind the steering wheel, almost everything in the car can be checked. That is, it can be sensed and it can be controlled. The car will be filled with all types of sensors. Let's say some examples. Okay, like temperature sensor, GPS sensors, pressure sensors, velocity sensors. Okay, that are meant to provide a wealth of rich and relevant data to, among many other things, improve safety, simplify vehicle maintenance. Okay, and all in all, it will enhance our driver's experience. Okay, so these kind of sensors are the fundamental building blocks of the IoT networks. In fact, there are the foundational elements found in the smart objects. That is, these are the things in the Internet of Things. Okay, smart objects are any physical objects that contain embedded technology to sense or interact with their environment in a meaningful way by being interconnected and enabling communication among themselves or an external agent. Okay, so that means that if somebody asks that what do you mean by things in the Internet of Things, okay, or what do you mean by smart objects in the Internet of Things, then rather than saying just that, okay, sensors will be known as things in the Internet of Things, or smart objects will be known as things in the Internet of Things, you can define in such a way that these are the objects, or you can say these are the devices which has some kind of technology embedded inside them. Okay, and what does this technology do? It will be able to sense or interact with the environment, and that will provide some kind of data which will be a meaningful data. Okay, why it will be a meaningful data? Because we will be interconnected with more than one sensors in the whole system. We will establish the communication between them, or we will establish the communication between them and our network, and we will enhance the driver's experience if we are considering example of the autonomous vehicle. Guys, समझ में आ रहा है?
Yes or no? Hello. Hello. Guys, are you able to understand? Like whenever I ask what do we mean by smart objects, then what will be your definition? Like rather than giving just the answer like okay ma'am sensors आएंगे और smart objects में, you should be able to give the definition of the sensor itself. Okay guys? Hello. Am I audible guys? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Uh, are you able to understand the first slide guys? Yes, ma'am. Okay. Guys, if you are not able to speak, then please message, okay? Okay, I'm not able to. Okay. Guys, is my PPT visible? What are we going to Yes, ma'am. okay, what are we going to discuss in this particular unit? Okay, then we are going to discuss about the sensors, we are going to discuss about the actuators, and we're going to discuss about the smart objects. Okay, then can anybody tell me what is the difference between sensors and actuators? गाइस क्वेश्चन समझ में आ रहा है? A sensor sends the data and convert analog to digital format means voltage to digital. In an environment form to a voltage form, then it is converted digitally. Right? An actuator performs a mechanical operation according to the sensor's data sensed and microcontroller signals sent to it. Okay, very good, correct. So can you give me any one kind of example of Servo actuators? motor is actuator. Ha, servo motor is an actuator. Very good. Okay. Okay, then we are going to discuss about the wireless sensor networks. Okay, now what do we mean by the sensor network? Then it will cover the design, drivers for adoption, and deployment challenges of the sensor networks. That means that whenever we are seeing that we are using multiple sensors at the same time, okay, and we are seeing that they are interconnected and they are interoperable, and then all of this particular sensors are connected to some kind of gateway or some kind of cloud server, okay, where the data is being processed. So what are the challenges in designing our sensor network? Okay, what are the things which we need to consider when we are designing the sensor network? Those kind of topics will be discussed. Okay, now for this particular lecture we'll finish off the sensor part. Okay, why I'm saying that we'll finish off the sensor part is because I think majority of you will be aware of what do we mean by sensors and what are the types of the sensors. Yes or no guys? So if we don't discuss much in detail about the sensors, will it be okay that if I discuss about what do we mean by sensors and what do we mean by types of sensors That's like okay, analog? ma'am. We can skip. Okay, so so I'm not saying that I am entirely skipping that particular point, but we'll just discuss in one particular lecture itself. Okay, I'm not like I'm not assigning a different lecture to the topic sensor. Okay, but if you are not able to understand any of it, then please let me know. Now okay, so following whatever sections which we are going to study, it will describe the capability, it will describe the characteristics, and it will describe the functionality of several kind of sensors and the actuators. Okay, now it will also detail how the economic and technical conditions are finally right for IoT to flourish.
Okay, now what do we mean by that? That whenever we understand the sensors, whenever we understand the actuators, then whatever it is happening in the world right now, we will be able to say that, okay, like this is the perfect time where we can implement the IoT projects. Okay, now we'll be able to see how to bring these foundational elements together to form a smart objects. Like we'll understand the sensors, we'll understand the actuators, and then we'll understand how to make smart objects out of it, now which are connected to form the sensors and actuator networks. That means that with the help of the smart objects, we are going to connect in wireless sensor network, or we are going to design in wireless sensor network that will make the most IoT use cases possible. ओके, तो जो भी हम लोग IoT डोमेन्स देखते हैं, ओके, IoT डोमेन्स मतलब हेल्थ केयर वाला डोमेन होता है, ऑटोनोमस व्हीकल वाला डोमेन होता है, स्मार्ट सिटी वाला डोमेन होता है, ओके, स्मार्ट एग्रीकल्चरल वाला डोमेन होता है. तो ये सारे डोमेन, what do we mostly say that we will be assigning them as one of the use cases in the IoT. Okay, that means that if this is the technology and how can we apply this technology, that is IoT in this particular domain. Okay, that we mean by the use cases. For you it will be more understand by the terminology case study, कि हमने IoT के ऊपर case study बनाया. Okay, so we are going to discuss this kind of particular points in the same order, like sensors, actuators, smart object, and wireless sensor networks. Now, what do we mean by sensors? Okay, then the most non-technical definition which you can give is, as the name suggests, it senses. Okay, sensors means it senses something. More specifically, if we go in much detail, then you will see that a sensor measures some physical quantity that, from the environment, and converts that measurement reading into a digital representation. Okay, so that means that it will convert, you can say it, that any kind of environmental properties. Okay, it can be temperature, it can be pressure, it can be movement, it can be velocity. Okay, it will sense something, some physical quantity, and it will convert that physical quantity into some kind of voltage. Okay, here they are saying digital representation is because majority of them are nowadays digital sensor. Okay, but it is not necessary. It can be in form of analog voltage, or it can be form of the digital voltage, but it will be majoritarily it will be in the form of voltage. I know there are some kind of sensors, okay, in which the output is not the voltage, but majority of the sensors output is in terms of the voltage. Or you can say that some kind of representation of any physical any fundamental quantity. It can be it can be in the form of the current itself, or it can be in the form of voltage itself. Okay, so we are going to use that fundamental quantities in the output part. That digital representation is typically passed to another device for transformation into useful data that can be consumed by intelligent devices or humans. That means that we are going to pass on this data to our microcontroller. That microcontroller will convert this particular data into some useful data, and that useful data will be sent it to the gateway or to the cloud, where it will perform some kind of data processing, and user will get some kind of action based on that particular data. Okay, naturally a parallel can be drawn with humans and the use of their five senses to learn about their surroundings. That means, okay, we can just if you are not able to understand it, then you can understand in a way that every human has five kind of senses. Okay, that means that they can visualize something, they can smell something, they can taste something, they can listen something. Okay, and they can sense something. So these particular five senses, you can say that it acts as a form of a sensor. Okay, it will sense something, some physical quantity from the environment. Okay, you will be able to see something. That means the visualization part is the physical quantity, or the odor particles which you are able to smell are the form of the physical quantity. Okay, and your you can say the brain is your microcontroller
part which is converting this particular physical quantity into some kind of useful data. Okay, and based on that you are taking some kind of action, like if something is hot, then you won't be able to touch it. Okay, like you will take your hand from that particular from that particular surface. So the same way the sensor and the sensor network works. Instead, they complement each other and compute together, empowering the human brain to make intelligent decisions. That means that here our ISPCP is human brain. The brain is the ultimate decision maker, and it often uses several sources of sensory input to validate an event and compensate for the incomplete information. That means sometimes it happens that your brain is not getting the complete data or the complete information part. Okay, that means that if you are able to let's say you are able to smell something, okay, but based on your smell data you are not able to judge that whether this particular food is okay or not. Okay, then that means that your brain will tell you that, okay, taste that particular thing just in a small dose and I will be able to understand whether this is eatable or not. Okay, so that means that sometimes it will get the to process the data or to take some kind of action, it will be gathering data from more than one sensor. Okay, तो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग को वायरलेस सेंसर नेटवर्क बना सकते हैं कि कोई एक सेंसर का डेटा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है हम लोगों को. गाइस, ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Now sensors are not limited to human like sensory data. Okay, they can measure anything worth measuring. In fact, they are able to provide an extremely wide spectrum of reach and diverse measurement of data with far greater precision than human senses. Sensors provide, you can say that, superhuman sensory capabilities. Okay, so हमारे पास तो सिर्फ you can say that there are only 5 types of sensors. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सेंसर्स भी सिर्फ उतने टाइप के होते हैं. ओके, you can create also and you can find any kind of sensors which will be able to measure any kind of physical quantity present in the environment. Okay, और उसके बेसिस पे आप लोग कुछ भी डिसीजन ले सकते हो. सो यू कैन से दैट इन दिस वे sensors are much more advanced compared to the human technology. Okay, like generally what we'll say is that okay, कि जो human processing कर सकते हैं या तो for example अगर कैमरा की कंपैरिजन हो रही है, then we'll say that okay, our retina is much more far advanced. Okay, तो वो जो कर सकता है वो कोई फोन नहीं कर सकता या कोई फोन का कैमरा नहीं कर सकता. But here in terms of sensors are advanced. This additional dimension of data makes the physical world an incredibly valuable source of information. That means कि अगर हम लोग सेंसर क्या सेंस कर रहा है, एनवायरमेंट से अगर कुछ सेंस कर रहा है, and I am seeing that I have you can say that huge variety of senses possible. That means that our environment will serve as a valuable source of our information. Okay, like हम लोगों को कुछ भी information मिल सकती है environment में से. Sensors can be readily embedded in any physical objects that are easily connected to the internet by wired or wireless networks. That means चलो हमारे पास sensors तो available हैं, हमारे पास environment भी available है, but हम लोग को उसका use करना भी आना चाहिए. Okay, so that means whatever they are trying to say is कि हम लोगों को सिर्फ मॉड्यूल ही बनाना पड़ेगा which will be readily available in the market, और जैसे ही हम लोग मॉड्यूल बनाएंगे हम लोग उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के साथ. आइदर वी कैन यूज सम काइंड ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और वी कैन यूज सम काइंड ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. ओके, तो हम लोगों का वायर्ड सेंसर नेटवर्क बन सकता है या तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क हम लोग डिजाइन कर सकते हैं. Because this connected host physical objects with multi-dimensional sensing capabilities communicate with each other and external systems, they can interpret their environment and make intelligent decisions. Connecting sensing devices in this way has ushered in the world of an IoT and a whole new paradigm of the business intelligence. That means that if I'm able to create a wireless sensor networks, okay, and in those wireless sensor networks, those sensors are able to, those physical objects are able to sense from the environment. Okay, so that means that
I am creating a one different kind of technology which will be very useful in any kind of business possible. Okay, why in any kind of business possible? Because in every kind of business you will be getting some input from the environment. So if I'm saying that all that there are so many sensors which you can say that they will be able to provide the conversion between your environmental quantity to your voltage quantity. Okay, so that means that you will be able to provide the services in every kind of business domain you can think of. Now, how many types of sensors are available? Then you can say that majoritarily there are four types of sensors. Okay, one is analog, active or passive. Yes, I have not included this analog or digital part, so there will be five kind of sensors: active or passive, invasive or non-invasive, contact or no contact, absolute or relative. Okay, so these are the main types of sensors. तो मैम एक्टिव और पैसिव सेंसर में क्या डिफरेंस है? ओके, then that means that whether we are embedding a power source inside it or not, based on that we'll be able to decide whether it is active or passive. Okay, sensors can be categorized based on whether they produce an energy output and typically require an external power supply, or whether they simply receive energy and typically require no external power supply. Okay, that means that if okay, एक्टिव और पैसिव का एग्जांपल आई थिंक आरएफआईडी या पीआईआर सेंसर सही रहेगा. ओके, सो उसमें हम लोग क्या बोलना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिव और पैसिव सेंसर्स? दैट मींस दैट इफ यू वांट टू सेंसर्स क्या करेगा? कन्वर्जन का काम करेगा. अगर कन्वर्जन के लिए उसको पावर सप्लाई चाहिए, ओके, सो दैट मींस दैट दिस इज एन एक्टिव काइंड ऑफ अ सेंसर. बट उसको कन्वर्जन करने के लिए अगर पावर सप्लाई नहीं चाहिए, दैट मींस दैट इट इज अ पैसिव काइंड ऑफ सेंसर. ओके, नाउ व्हाट डू वी okay, I think let me ask, if you don't know then I will tell you. Then can anybody tell me the example of the active sensor or the example of the passive sensor? कोई मुझे बता पाएगा? मैम DH11 एक्टिव. Okay. Ma'am, you want the definition of this? No, I just want the example. Example. हाँ. Passive sensor, like we can say. Like like passive sensors के example क्या रहेंगे? Temperature register, the thermistor. That will be a passive sensor example. Okay, तो active sensor क्या? बताया ना पहले वो ये DHT11 और the alcohol sensing device or the rain meter. Okay. Or the humidity sensor. Humidity sensor. Okay. आपको कैसे पता चला कि इसको पैसिव बोलेंगे और इसको एक्टिव बोलेंगे? लाइक DHT11 को मैं एक्टिव सेंसर बोलूंगा, और दूसरा कौन सा बोला पैसिव में आपने? इसे मैम थर्मिस्टर. थर्मिस्टर बोला. मैम वो पैसिव डिवाइस है ना मैम, रजिस्टर क्या ये सब पैसिव डिवाइस होते हैं. ओके. और जो अपन ये रेन सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर है, इसमें मतलब सीमॉस टाइप सेंसरिंग होती है जो ये ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाई जाती है शायद. ओके. ओके, एक्टिव डिवाइसेस आप इसी वाले हो ना? तो एक्टिव डिवाइसेस किसको बोलते हैं और पैसिव डिवाइसेस किसको बोलते हैं? चलो, ये ट्रांजिस्टर इज एन एक्टिव डिवाइस, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आर पैसिव डिवाइस. हाँ, अभी आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला मुझे कि उनको पावर चाहिए, जो जिनको चलने के लिए भी पावर चाहिए उनको एक्टिव डिवाइस बोलते हैं. ओके. और जिनको कोई पावर नहीं चाहिए, मतलब कुछ रिएक्ट करने के लिए पैसिव डिवाइस. ओके, सो दैट मींस कि DHT11 को चलने के लिए पावर चाहिए, इसीलिए वो एक्टिव डिवाइस है, ऐसा. और थर्मिस्टर को अगर पावर नहीं मिलेगा फिर भी कन्वर्जन हो जाएगा, इसलिए वो पैसिव डिवाइस, समथिंग लाइक दैट. No, ma'am. Thermistor is an active device.
Okay. Now thermistor is active device. Thermistor को काम करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए. ओके गाइस, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है. ओके, जनरली एनालॉग डिजिटल का एक लाइक एग्जांपल दे सकते हो कि LM35 एनालॉग, फिर DHT11 डिजिटल. ओके, सो दैट इज आल्सो ओके. इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव का भी आप लोग दे सकते हो गूगल करके, कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि इफ वी आर लाइक अगर बॉडी पार्ट के अंदर हम लोग सेंसर को रख के कुछ मेजर कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज वन काइंड ऑफ इन्वेसिव सेंसर. और अगर एक्सटर्नल विदाउट टचिंग द बॉडी पार्ट अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं measure, then we will see that it is an example of non invasive sensor. okay, so वो easy हो जाएगा. but active और passive का मुझे जानना था. like there will be some students who will always be confused. अगर definition आती है फिर भी example नहीं आएगा. गाइस, अभी समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहती हूँ? ओके, लेट्स से LDR सेंसर का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes. ओके, वो क्या करता है LDR सेंसर? Ma'am, it measures the intensity of light. उसके लिए पावर सप्लाई चाहिए क्या? ना मैम, वो पैसिव है. हाँ, पैसिव मतलब क्या कि जैसे ही उस LDR पे लाइट इंटेंसिटी पड़ेगी उसके हिसाब से वो मुझे आउटपुट देने लगेगा. अगर ज्यादा इंटेंसिटी है तो ज्यादा आउटपुट, कम इंटेंसिटी है तो कम आउटपुट. इन द सेम वे यू कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का कोई हीट सेंसर है, वाइब्रेशन सेंसर है, तो मतलब क्या है उसका? मतलब ये है कि कोई भी जो फिजिकल स्टिमुलाई है, ओके, जो हम लोग एनवायरनमेंट से सेंस कर रहे हैं, उसके लिए उसको कोई भी पावर सप्लाई नहीं चाहिए. ओके, जैसे ही वो लाइक वो फिनोमिना शुरू हो जाएगी मेरे एनवायरनमेंट में, हीटिंग वाली है या फिर लाइट इंटेंसिटी वाली है या फिर प्रेशर वाली है, ओके, या फिर वाइब्रेशन वाली है, उसके हिसाब से वो मुझे आउटपुट देने लगेगा. बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कंसिडरिंग अ सोनार, okay, or you are considering RFID in which you are using active tags, okay, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को कन्वर्जन परफॉर्म करने के लिए some kind of power supply or some kind of transducer will be required. okay, अगर फिर भी एनवायरनमेंट में वो सब होगा फिर भी वो सेंस नहीं कर पाएगा. जैसे ही ट्रांसड्यूसर ऑन होगा वैसे ही सब कुछ काम करने लगेगा. गाइस, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हेलो हेलो. Yes, ma'am. ओके, सो दैट मीन्स कि नो, यश वाज करेक्ट एक्चुअली कि थर्मिस्टर जो होता है दैट इज अ पैसिव डिवाइस. ओके, व्हाई इट इज अ पैसिव डिवाइस इज बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा वो अपना डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा. ओके, इफ इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स अगर हीट बढ़ेगी तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा. रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ दैट मीन्स हीट मेरी डिक्रीज हुई. ओके, तो इसके लिए उसको कोई भी एक्टिव पावर सप्लाई नहीं चाहिए. ओके, दैट मीन्स कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं चाहिए. ये पैसिव सोर्स से मेरा ये काम हो जाएगा. बट फॉर एग्जांपल मैं वो जो IR LED का मॉड्यूल आता है, राइट, वो अगर मैं यूज कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे एज पावर मॉड्यूल इसीलिए आता है बिकॉज उसमें मेरा ट्रांसड्यूसर फिट रहता है. ओके, तो जैसे ही वो चालू तो ही होगा कि अगर मैंने पावर सप्लाई में पावर दिया है. ओके, उसके बाद ही वो सब कुछ कन्वर्जन चालू होगा. अल्ट्रासोनिक सेंसर भी वैसे ही काम करेगा कि अगर मैंने पावर सप्लाई दिया है तो वो कुछ लाइक सोनार की जो फ्रीक्वेंसी है वो
वो भेजने लगेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर कुछ आएगा तो फिर वापस आ जाएगा, और बेस्ड ऑन द डिस्टेंस विल बी एबल टू से वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। ओके, तो इन सब के लिए मुझे पावर सप्लाई चाहिए होगा। गाइस अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि सेंसर में अगर हम लोग 5 वोल्ट दे रहे हैं, 3.3 वोल्ट दे रहे हैं तो हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं, ये हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। गाइस अभी समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ओके, और आई नो कि आईआर में पैसिव इंफ्रारेड सेंसर भी आते हैं, बट हम लोग आईआर एलईडी के एग्जांपल में मैंने पैसिव से नहीं करवाया था, एक्टिव से कर पाया था, जो तो आप लोग समझ सके। हेलो गाइस, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, now you go or search what are the examples of the active sensors. Okay, what are the examples of the passive sensors, or understand the RFID part. तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि why there are two types of tags present, active tags and passive tags. Okay, उसका क्या मतलब होता है? If I'm using active tag मेरे प्रोजेक्ट में तो क्या होगा, if I'm using passive tags तो मेरे प्रोजेक्ट में क्या होगा? Okay, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। The same way, invasive and non-invasive. दैट इज आप लोग को जो पता है वही है, बेस्ड ऑन हम लोग जो इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव मेथड यूज करते हैं इन आवर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। ओके, sensors can be categorized based on whether a sensor is a part of the environment it is measuring, that is invasive, or it is external to it, that is non invasive। okay, that means biomedical applications में हम लोग क्या करते थे कि कोई भी एक सेंसर है, ओके, अगर उसको हम बॉडी पे सिर्फ टच करके ही अगर हम लोग डेटा ले सकते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज अ नॉन इन्वेसिव। ओके, बट अगर हम लोगों को कुछ कट करना पड़ेगा हमारी स्किन और फिर सेंसर उसके अंदर डालना पड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर। बेस्ड ऑन दैट ये भी वही है, बट इसमें उन लोगों ने हमारे बॉडी का एग्जांपल नहीं लिया है, उन लोगों ने एनवायरमेंट का एग्जांपल लिया है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ओके, दैट मींस कि अगर एनवायरमेंट्स के साथ कनेक्टेड होके ही अगर कन्वर्जन होता है, दैट मींस दैट इट इज एन इन्वेसिव सेंसर। और अगर हम लोग एनवायरमेंट अलग है और हमारा सेंसर अलग है और सिर्फ कांटेक्ट हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट मींस दैट इट इज अ नॉन इन्वेसिव काइंड ऑफ सेंसर। ओके, तो उसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखने जाए, लाइक बेस्ड ऑन दैट इफ you are able to understand, then we can say that बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के एग्जांपल मुझे तो याद है अभी। ओके, ओके, सिंपल करंट सेंसर हम लोगों का वो भी इजी रहेगा। इट इज वन काइंड ऑफ अ नॉन इन्वेसिव सेंसर। नॉन इन्वेसिव सेंसर क्यों? अगर आप लोगों को पता है ओके कि फ्लूक के जो मल्टीमीटर आते थे वो सिंपल से अगर मल्टीमीटर होते थे तो आपको क्या करना पड़ता था कि आपको सर्किट में वो इंक्लूड करना पड़ता था। ओके, बट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर आते हैं उसमें क्या होता है कि आप लोग एक्सटर्नली यू कैन से दैट क्लैम्प्ड मल्टीमीटर्स जो आते हैं कि अगर आप लोगों को करंट मेजर करना है तो जो भी वायर का करंट मेजर करना है उस पे आप लोग क्लैंप कर दोगे। ओके, और डिस्प्ले पे आपको पता चल जाएगा कि इस वायर का करंट दिस पर्टिकुलर डेटा इज देयर, ओके, 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर। तो उसमें क्या हुआ कि आप लोगों ने ये वाला जो मल्टीमीटर है उसमें वो एक्सटर्नली कनेक्टेड है आपके पूरी सर्किट के साथ। ओके, सो दिस काइंड ऑफ करंट सेंसर्स आल्सो एग्जिस्ट। तो ये वाले करंट सेंसर्स नॉन इन्वेसिव सेंसर्स हुए, बट अगर आप लोगों को अपनी सर्किट में इंक्लूड करना पड़ा, दैट मींस यू आर कनेक्टिंग दिस इन सीरीज, तो आप लोग उसको इन्वेसिव करंट सेंसर बोलेंगे। गाइस ये वाली पॉइंट समझ में आ रहा है या फिर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है? आई जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट कि अगर आप लोगों को करंट मेजर करना है मल्टीमीटर से तो देयर वर 2 मेथड्स, राइट? यस और नो गाइस? कि भूल गए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट?
Hello. 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 Am I audible, guys? Yes, ma'am. Okay. तो ओके, आप लोग करंट कैसे मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मल्टीमीटर? मुझे कोई बता सकता है? वोल्टेज मेजर कर लो और रेजिस्टेंस मेजर कर लो, फिर आई की वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, इन टर्म्स ऑफ बायोमेडिकल में तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कोई मेम्स वाला सेंसर है और हार्ट बीट मेजर करने के लिए या फिर SpO2 मेजर करने के लिए जो मैं ऐसे ही इंक्लूड करता हूँ तो उसको मैं नॉन इन्वेजिव सेंसर बोलता हूँ। बट अगर लाइक लाइक ऑपरेशन करके अगर मैं बॉडी में अपना सेंसर्स डाल रहा हूँ, ओके, टू मेजर दी ब्लड प्रेशर, टू मेजर दी हार्ट बीट, तो उसको मैं इन्वेजिव सेंसर बोलूंगा और इस वाले पार्ट को नॉन इन्वेजिव सेंसर बोलूंगा। बट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, तो करंट सेंसर इज अ एग्जांपल वेयर इट कैन बी इन्वेजिव सेंसर एंड इट कैन बी अ नॉन इन्वेजिव सेंसर। तो नॉन इन्वेजिव सेंसर हम लोग करंट सेंसर को क्यों बोलते हैं? देन इट इज बेस्ड ऑन हाउ यू मेजर करंट, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मल्टीमीटर यू आर यूजिंग, ओके, उसके हिसाब से आप लोग इजीली समझ सकते हो। तो करंट में फाइंड करने के लिए आप लोग फ्लूक का ये वाला, ओके, लेट मी जस्ट गिव यू द इमेजेस तो आप लोगों को पता चलेगा। करंट मेजरमेंट मल्टीमीटर, ओके, अगर आप लोगों को कुछ okay, let's say, let me download this. Current measuring multimeter, lamp वाला part, okay. Let me download this. और now let me okay. Guys, is my screen visible?
Yes, ma'am. ओके, सो मैं ये बात बता रही हूँ। ओके, अगर आपको करंट मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को अपना जो मल्टीमीटर है ना वो सीरीज पे कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपकी सिस्टम में ये एक भाग हो गया। Okay, that's why we don't use this kind of an arrangement to measure the current. Okay, why? Because अगर कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर या यहाँ पर हुआ तो उसका सीधा असर मेरे मल्टीमीटर पे पड़ सकता है और मेरा मल्टीमीटर फ्राई हो सकता है। ओके, या तो मेरे मल्टीमीटर के हिसाब से मेरी बैटरी या तो मेरा जो भी लोड है वो फ्राई हो सकता है। ओके, तो दैट मीन्स कि ये मैंने क्या किया कि ये मैंने मेरा जो मल्टीमीटर है वो इन्वेजिव बना दिया। दैट मीन्स कि मेरे एनवायरमेंट में वो कनेक्टेड है। ओके, दे आर नॉट सेपरेटेड। और अगर आप लोग ये क्लैंप मल्टीमीटर देखे जो आप लोग अभी यूज करते हो, ओके, तो इसमें क्या होता है, आप लोग सिर्फ वायर के ऊपर ये क्लैंपिंग कर देते हो। यहाँ पर एक डिस्प्ले होता है जिसके हिसाब से आप लोग करंट मेजर कर सकते हो। दैट मीन्स कि मेरा जो ये मल्टीमीटर है वो मेरी सिस्टम के साथ आई नो इन अ वे कनेक्टेड है, बट फिजिकली वो कनेक्टेड नहीं है। गाइज, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती थी इन द करंट सेंसर इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव वाला पार्ट, कि अभी भी थोड़ा डाउट है कि ये वाला पॉइंट आपको पता ही नहीं था कि ऐसे दो तरह के मल्टीमीटर आते हैं? मैम, ओके, क्लैम्प वर्ड रिपीट करो। ओके ओके, सो यू डिडंट नो दिस टॉपिक। ओके, तो फिर कैसे समझ में आएगा अगर मैं इस टॉपिक को लेके आपको नॉन इन्वेजिव। ओके ओके, तो अगर ऐसा कुछ होना तो बोल देना कि मैम हमें वो याद नहीं है वो टॉपिक, या फिर हमने नहीं पढ़ा है। ओके, तो मैं ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करूं। ओके ओके, तो करंट मेजर करने के लिए मल्टीमीटर पे आप लोग जो वो वाला जो एम्पियर देखते हो ना, तो वो तभी मिलता है आपको जब आप वो सीरीज पे कनेक्ट करते हो आपकी सिस्टम के साथ। ओके, आपका मल्टीमीटर। ओके, तो मिल सकता है। इट इज इजी। व्हाई इट इज इजी इज बिकॉज कि अगर आप लोग सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज सेम रहेगा या करंट सेम रहेगा? सीरीज कनेक्शन में क्या होता है गाइस? करंट विल बी सेम। क्या होगा? करंट विल बी सेम। ओके, तो वोल्टेज किस में सेम रहेगा? पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो दैट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे लोड पे करंट जानना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो मल्टीमीटर है वो सीरीज पे कनेक्ट कर दूंगा विथ लोड। ओके, सो अगर मैंने वो किया है तो जो भी मुझे वोल्ट मल्टीमीटर में जो भी करंट मिल रहा है वो ही करंट मेरे लोड में जा रहा होगा, तो उसके हिसाब से मुझे पता चल जाएगा ओ दैट दिस इज कंज्यूमिंग, दिस वायर इज कंज्यूमिंग 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.7 एम्पियर। बट सीरीज पे एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि ये दोनों एक पॉइंट उन लोगों का कॉमन रहेगा। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर हम लोगों ने ये सिस्टम में डाल दिया है, मेरा कंपोनेंट बाहर नहीं है, मेरी सिस्टम के अंदर है। ओके, दैट मीन्स इट इज एन इन्वेजिव काइंड ऑफ अ पार्ट। सो उसके हिसाब से सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होंगे। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी कंपोनेंट उड़ सकता है, या तो मल्टीमीटर उठ सकता है, या तो मेरा बैटरी उठ सकती है, या तो मेरा लोड उठ सकता है। ओके, तो व्हाई दैट इज द केस इज बिकॉज कि हम लोगों को पता नहीं है कि ये करंट के इसकी करंट की कैपेबिलिटी क्या होगी, वोल्टेज की कैपेबिलिटी क्या होगी। ओके, बट ऐसे टाइप के क्लैंप मीटर्स आते हैं। ओके, जस्ट सर्च इन गूगल क्लैंप मल्टीमीटर या तो फ्लूक क्लैंप मल्टीमीटर, समथिंग लाइक दैट अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना ये भी एक तरह का मल्टीमीटर ही है। यहाँ पर उसका डिस्प्ले दिया गया है। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी भी वायर का अगर आप लोगों को करंट मेजर करना है तो आपको उसको सीरीज पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ क्या करोगे, दिस इज वन काइंड ऑफ हुक। ओके, ये हुक की तरह काम करता है। तो ये जैसे ही ओपन होगा इसमें हम लोग वायर डाल देंगे और क्लोज कर देंगे, तो जैसे ही ये ऐसे कांटेक्ट में आएगा इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द हम लोग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स है ना, आप ईएम पढ़ रहे हो ना, उसमें जो भी लॉ अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से ये काम करता है। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्ले पे आ जाएगा कि 0.5 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। बट ये वाला जो मल्टीमीटर है हम लोगों ने सीरीज पे कनेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स हमारे सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो इसके हिसाब से जो हम लोग करंट सेंसर बोलते हैं, तो
तो इसको नॉन इन्वेसिव करंट सेंसर्स बोलते हैं। ओके, कि एनवायरमेंट का पार्ट नहीं बन गया है वो। बट अगर इन्वेसिव करंट सेंसर होते तो वो ये वाले मल्टीमीटर जो आप लोगों ने ट्रेडिशनल मल्टीमीटर देखे वो, तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ द इन्वेसिव मेथड। गाइस अभी थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं रहा तो छोड़ दो, बायोमेडिकल एप्लीकेशन की तरह से देखो। ओके, कोई मेम्स वाला सेंसर है, अगर आप लोग आपका डॉक्टर ये कहता है कि पेट में ये पहले छुरा भोंकना पड़ेगा, उसके बाद मैं सेंसर वहां पर डालूंगा और फिर स्टिचेस मार दूंगा। ओके, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं इन्वेसिव सेंसर बोलूंगा। ओके, और अगर मैंने क्या किया है, सिर्फ SpO2 सेंसर है वो मेरे फिंगर पे रखा है और मुझे आउटपुट मिल रहा है और फिर मैं उसको डिसअटैच कर देती हूँ। ओके, तो इसका एग्जांपल नॉन इन्वेसिव हुआ। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट आपके बॉडी के हिसाब से समझो। ओके, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। गाइस समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ओके, देन यू कैन गिव योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव। मैं वीएलएसआई के लिए दूसरी लिंक भेजती हूँ। Okay.